A visit to Cambridge. This is the chapter name. No, earlier England was important to the author. That means it is very clear about it is about author only because there was Cambridge. Now it had a greater appeal for him. He had met Stephen Hawking. You have listened the name also Stephen Hawking. Stephen Hawking का आप नाम भी सुने होंगे. There during a walk tour, Stephen Hawking is a disabled person. Here, Stephen Hawking is a disabled person. He is successor of Isaac Newton. Yes, and you have listened the name also Isaac Newton. Now, and has his chair at the university. He is a brilliant astrophysicist. He is also the author of A Brief History of Time. A Brief History of Time. इट इज द बिगेस्ट बेस्ट सेलर ऑफ हिज टाइम्स. उस समय में ये बुक जो है बहुत ही ज्यादा सेल भी हुई थी. नाउ द टूर वाज ओवर. द राइटर फोन्ड स्टीफन हॉकिंग्स होम. हॉकिंग्स असिस्टेंट अटेंडेड द टेलीफोन कॉल. जैसे ही उनको कॉल किया गया, देन हु अटेंडेड? असिस्टेंट. ही टोल्ड द असिस्टेंट that he had come from India. He added that he was on a wheelchair. He mentioned that he wanted to write a book about his travels in Britain. Then he expressed his desire to see Stephen Hawking. राइटर ने साफ साफ बोला कि मैं उनके ऊपर कुछ राइट करना चाहता हूँ और मेरी जो इच्छा है वो ये इच्छा है कि मैं स्टीफन हॉकिंग से मिलूं. The time for his meeting, the professor was fixed. It was from 3:30 to 4. बोला कि ठीक है, आप 3 साढ़े 3 बजे से 4 के बीच में मिलते हैं. आपसे टाइम दिया गया 3:30 to 4. Now the interview began to on time. The writer felt that the disabled got fed up with the people asking them to be brave. They got stronger on seeing somebody like them achieving something huge. The computer voice replied that Professor Stephen Hawking hadn't ever been brave. He had no choice in it. Yes, इस तरह से कंप्यूटर वॉइस से उन्हें आवाज सुनाई पड़ा. Now, the writer told him that most people think that the disabled people are chronically unhappy. उनका ऐसा मानना था कि ज्यादातर लोग जो होते हैं, जो डिजेबल्ड होते हैं, वो अनहैप्पी महसूस करते हैं. He asked Hawking if he found this amusing. The voice replied that he found it amusing when people patronized him. The writer's next question was about himself. He asked whether he felt. Question was about himself. He asked whether he felt annoyed when people like him distributed him. The answer flashed yes. Hawking smiled after giving this answer. Professor Hawking appeared to the writer as one of the most beautiful men in the world. जब उन्हें सवाल का जवाब मिला, देन राइटर के सामने स्टीफन हॉकिंग भी आए. हॉकिंग आए उनके सामने, अपियर हुए, और जब उन्होंने देखा, बोला, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड. However, the writer was shaken by his first glimpse. He seemed only a skeleton then. ऐसा देखने पर उनको बिलीव हुआ. He seemed only a skeleton then. The writer asked Hawking's opinion about the best thing about being disabled. Yes, disabled के लिए उनका तो बहुत बड़ी मैसेज आने वाली है. The reply was negative. The writer's next question was if this didn't help him discover great kindness in the world. The voice agreed fully with the writer. Like others, the writer also got highly inspired by the answers. This idea didn't appeal or console Hawking. The question made the writer feel sorry. Others' admiration of the Hawking's living could not console him. Then the writer asked him about his advice to the disabled people. Yes, अब इनकी बात आ रही है टोटली के टोटली डिजेबल पर्सन के बारे में, क्योंकि हॉकिंस भी डिजेबल था.
अब राइटर वहाँ पर बहुत सारी चीज़ मैसेज लाना चाहते हैं, डिजेबल्ड पीपल के लोगों के बारे में, डिजेबल्ड पीपल के बारे में, उनको क्या मैसेज यहाँ से मिलेगा? द वॉइस एडवाइज द डिजेबल्ड टू कंसंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड। ऑब्वियसली सभी इंसानों के पास कुछ ना कुछ अच्छा करने की, कुछ ना कुछ डिफरेंट करने की कैपेसिटी होती है। उनमें डिफरेंट टाइप की क्वालिटी होती है, बट वो क्वालिटी को तब शो कर पाएंगे जब वो उसे चाहेंगे। विलिंगनेस होनी चाहिए, तभी कोई भी डिजेबल हो तब अच्छा से अच्छा काम कर लेते हैं। और कभी तो जो डिजेबल नहीं है, विल पीपल है, अच्छे है, फिजिकली बहुत स्ट्रांग है, उसके बाद भी बहुत अच्छा काम नहीं कर पाते। दे शुड ट्राई नथिंग बियॉन्ड एज, दे मस्ट नॉट बी ओवर enthusiastic. Then the writer saw Hawking's big garden. At last he willed out. The writer found his journey successful and inspiring. उन्होंने जब ये देखा राइटर कि यहाँ पर जो कुछ मिल रहा है हॉकिंस के द्वारा, प्रोफेसर हॉकिंग के द्वारा जो भी मुझे मिल रहा है, ये बता जा रहा है कि डिजेबल पीपल भी बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, उनमें वो अच्छाई रहती है। और वो राइटर को आज ये जर्नी बहुत ही सक्सेसफुल लगा, क्योंकि जब वो ब्रिटेन गए, वहां जाने के बाद हॉकिंग से जब मिला, तो देख करके उन्हें आश्चर्य लगा कि इस तरह से भी इंसान होती है, इस तरह क्वालिटी होती है, इस तरह से गुण होते हैं। और वह उनसे आज राइटर जो है हॉकिंग से, प्रोफेसर हॉकिंग से बहुत ही इंस्पायर भी हो गए। थैंक यू, थैंक यू।